now that you're what content director, Yes. so 101. How does it work? तो कब हुआ वैसे? Last year about May के आसपास 2024 में अल्टीमेट सिग्नेचर मेरा होएगा. बराबर. You ask me, my first love will always be being on air. I mean, you were bloody good, यार. You very good, sir. Word मत बोल. नहीं. I'm feeling old again. We are still going strong, especially in the UAE market. Fortunately for us, बहुत ट्रैफिक है. ये बेस्ट चीज है, राइट? कभी हुआ है कि गाली you're also from Delhi है. हाँ. कभी हुआ है ऐसा कि आते दिल्ली के अंदर आई रिमेम्बर एक बारी हुआ था, बट नथिंग ग्रेट, नथिंग दैट मच, बट वो साला कुत्ता टाइप्स वो वाला निकला था. ये कैसी गाली है? सॉरी यार, बट आई एम सॉरी. ये थोड़ी नहीं गाली. Disappointed. दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम. ये मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा. टाइम आउट विद अंकित. टिप टिप टैप टप 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 टप, कॉफी का कप और गपशप लाइट चली, एक्शन हुआ, फिर मस्ती मस्ती का उड़ा धुआं. कोई केंचो, कोई वनक्कम, कोई मरहबा बल्ले. अरे आई सेट पर जब हबीबी, दिल विल सभी के जल्ले. मस्ती का खुलेगा यहाँ पिटारा, जो भी आएगा यहाँ सितारा, जश्न का बजेगा यहाँ नगाड़ा. टाइम आउट विद अंकित. दिल्ली का लौंडा दुबई में मच मच मचा रहा है धूम, दिल से पूछ रहा है सवाल, सबसे झूम बराबर झूम. ये चले शो भी शूट करना है यार. दुशासन क्या कर रहे हो यार? प्ले डूब रहा है. We are at doing what we know. My friend, how are you? I am very good. Thank you having me. No, please. Thank you for making time for time out. Like I said, Moksha was very excited as well once I told him that you were coming. It was good that, this worked out. He makes me sound old. मैं आपको सुना करता था वाला टाइप्स. But good to see you. Yeah, but you're now that you're what content director, Yes. so 101. How does it work? तो कब हुआ वैसे? ये हुआ last year, we're in 2025. So last year about May के आसपास 2024 में is when the shift happened. Tia, the one who was my predecessor, so she wanted to move on, spend time with the family, natural progression. So I was already the assistant programming head. So उस हिसाब से then फिर गद्दी हमारी हुई और हम जाके बैठे ऋतिक रोशन की तरह अग्निपथ में. But you're liking it because you're used to being there every morning. To be honest, it's very different. I did not expect it to be इतना ज़्यादा different. I would want to go on record and say कि if you ask me, my first love will always be being on air. Yeah, of course. But this one has its own challenges. It's a पूरा का पूरा different learning curve altogether. Now this time, वो होता है ना कि it's not just about कि यार you're giving ideas and you're just working around, and it's not just for those 4 hours एक show के लिए. अब it's for every show के लिए. You have to put in the ideas. You have to make sure कि everybody is right. And you're working with talent, right? Yes. Now you are no more the talent. Now the talent is sitting on the other side, and you have to make sure all the egos are met. Everybody is on the same page. Everybody has the same vision. Everybody has the same. They have the capacity and the capability, but everybody is looking in the right direction, and you're just there to make sure कि I'm standing behind you. हाँ. तुम आगे जाके लड़ो. हाँ. So it's kind of like you take the back seat, but
for a good cause. Yeah. If that makes makes sense. फिर भी काफी मतलब you I mean pretty much everything will now that content director everything will run by you in a way, right? Ultimate signature मेरा होएगा. बराबर But yeah, I also have to take certain permissions and all. But yeah, it is good कि certain things जो हम लोग को हमेशा लगता था कि यार ट्राई करके देखते हैं, शायद चल जाएगा, शायद नहीं चलेगा, but till the time you don't try, पता नहीं चलेगा. वो वाली चीजें अब थोड़ी सी और yeah, you have that leeway. because you've been on the other side as well. So you I mean you were bloody good, yeah. You very good, Sid. Word मत बोल. मेरे I'm feeling old again. Mokshat, I hate you. Bloody, you started this whole conversation, no? yeah, because you know, but overall radio ठीक है. अभी दो चार चीजें मेरे को रेडियो के बारे में पूछनी है. पूछ. Because ना, अब मेरे को पहले ये बताओ कि रेडियो एज अ होल नाउ हाँ. in terms of अभी because of car plays या air क्या बोलते हैं Apple Play and all of that. Yes. How's the consumption? What do you think? कि कितना consume हो रहा है अभी रेडियो आज के टाइम पे? We are still going strong, especially in the UAE market. Yeah. I would not comment on any other market, to be honest. India, I wouldn't want to say it's radio जहाँ से हम लोग छोड़ के आए थे back in what 2010 is when I shifted here. उससे पहले what radio was in India, it's just seen a downhill path. हाँ. Unfortunately, digital आ गया, TV got stronger, OTT platforms आ गए, 10 और चीजें हो गई वहाँ पे. Bollywood obviously is the biggest thing वहाँ पे. यहाँ पे fortunately or unfortunately, the other mediums are उतने ज़्यादा consumption उनकी नहीं है. अच्छा. Like we were discussing अभी थोड़ी देर पहले, the TV bit of things out here already आपका I think it's getting India feed आ रही है. तो उस केस के अंदर the actual what people are thinking and what people are talking and what people are saying is on radio. Yeah. And fortunately for us, बहुत traffic है. ये बेस्ट चीज है, राइट? ये बेस्ट People चीज. are मतलब और अब क्या है कि it's not कि सुबह और शाम को ट्रैफिक होता है. आप किसी भी टाइम पे आप निकल जाओ, हाँ. वो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा. पॉपुलेशन बढ़ रही है. Correct. For us, our Dubai 2040 plan, getting more population, we love it. but the consumption of radio has always been high. It is now significantly higher. We've reached last year we reached our pre-COVID levels back in terms of revenue again. Very good. So we're in a good space, I would say. And यहाँ पे yeah, digital is definitely picking up. But the consumption, radio के हिसाब से it's a very यार personal medium ना, कि आप फोन उठा के और आप and XYZ radio stations के साथ मैं बात कर रहा हूँ, whether it is my station or whether it is any other station also. Correct. You can pick up the phone and you can talk to the jock who is going to answer and who is going to give you a आपको एक फीडबैक. आप भी उसको फीडबैक दे सकते हो कि भाई ये तूने गाना चलाया मेरे को अच्छा नहीं लगा. वो भी सामने से बोल सकता है यार ये जो आपने बोला है कि ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगा. But it's that camaraderie which is there, and we all know that certain things we can say, certain things we don't want to say, certain things we cannot say. Everybody understands that, and it's a healthy society that we all, or a community that we all build up. And it's thanks to the leaders जो रोज के रोज डंडा भी देते हैं, but at the same time it's worked for everybody. Correct. Like literally for if अगर किसी का accident भी होता है, so the first thing that you go up and ask is not कि मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, how dare you, but are you okay? ठीक है. Those genuine reactions and those genuine talks are what makes this place Dubai or the UAE for that matter, right? And वही चीज replicate होती है रेडियो के ऊपर कि we don't even need to tell them कि आप ये बोल सकते हो और ये नहीं बोल सकते हो, unlike in India कि वहां पे तो मतलब सबको लगता है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. Yeah. Right. You're Delhi? Delhi. Yes, sir. I know. So it's like कि वहाँ पे तो कुछ आप एक छोटी सी चीज भी बोलोगे उसका इतना बड़ा बवाल बन जाता है, उसको आप यहाँ पे आ जाता है, उधर आ जाता है, ऑनलाइन में आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, all of those things happen. Definitely. यहाँ पे it's little more, I wouldn't say sorted, but I would say कि they make sure कि that emotions come first, and that is a big win for
the country, so to speak. Yeah, no, you're definitely right, but you're being far too kind in terms of TV and all. I mean, they need some miracle to happen, because I know I've agree. worked in that I agree. line. Yeah. I agree. So TRP wise, they need a miracle. But I like we were discussing earlier also, expat based market है. Exactly. लोग सुबह से शाम बाहर होते हैं, like you rightfully said, गाड़ी में ज़्यादा भी होते हैं. हाँ. So which in turn helps the radio Absolutely. side of things. The I think maximum people out here are in either sales or marketing job. And उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा. Correct. मतलब अगर आप you are on somebody who is not out, maybe you are working from home. Yeah. तो फिर आप Yeah. रेडियो नहीं सुनते हो. We hate you. Yeah, but I agree. At the moment also, in terms of reaching out, even for advertisers, even for reaching out, radio is one of the best mediums in this market. Agreed. No doubt. That's true. TV, you need help. Yeah, TV, you definitely need help. And we're more than happy to collaborate, bro. It's one of those media in itself. It's one of those things जहाँ पे collaborations happen and one feeds off the other. It always is a thing. Correct. Content, right? At the end of the day, Exactly. कौन consume कर रहा है आपका content? That's and then they should have fun. Exactly. I think काफी ज़्यादा corporatization जब हो जाता है तो फिर it becomes a little bit of a problem. Hey, that's a good point. But do you give leeway in terms of abhi now that, because even your presenters, your jocks at the moment are कोई मतलब नए इतने नहीं हैं. I mean, they've been at the game. Yes. So it's not that you bought in, but do you give them room to try out new stuff as well? I do, and I honestly believe, and I tell this to my jocks as well, कि there's no right or wrong in creativity. Correct. You know? Right. It's कि ये हो सकता है कि आपका आइडिया अभी इस टाइम के लिए might not be the right fit, but it does not mean कि it's not the right one. It's not a good idea. Yeah. Maybe इसको किसी और चीज के अंदर अगर implicate करते हैं, अगर कुछ लेकर आते हैं, तो फिर वहां पे चल सकता है. हाँ. मे बी एयरटेल के लिए कुछ आइडिया है और आपको लग रहा है कि मैं वो लुलू वाला आइडिया एयरटेल के अंदर फिट कर दूं, वो वाला नहीं हो पाएगा. बट देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग. ट्राई इट आउट. नहीं होगा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ रेडियो. एक बारी के अंदर ही पता चल जाएगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. नहीं चल रहा है, मूव ऑन एंड यूल फाइंड आउट. Yeah. बट एटलीस्ट यूल ट्राई. Of course, you'll get to know if it's working or not. Do एक ना जब मैंने, because I've also studied something like communications, right? RJ बनने का path क्या होता है? Is there a blueprint to कि यार ये पढ़ोगे तो तुम्हें ये आगे जाके opportunity मिलती है? हाँ. Because I swear अगर मेरे को मेरे time पे पता होता, I maybe would have tried. You know what I mean? Because I feel like I can pull it off. But करेक्ट. having said that, कोई तो एक कुछ होता होगा, right? कि आप ये पढ़ो और ये, I don't know, I'm asking you as a noob right now. No, that's fine. That's fine. Okay, so I'll tell you, I started off back in 2002. जब it was the first phase of these channels which had come in India. Red FM आया था, Radio Mirchi आया था, and there was Star Plus का Radio City. These were the only 3 channels in India जिसके साथ ने शुरू किया था इन्होंने. उससे पहले it was AIR, जहाँ पे Times FM का 2 घंटे का slot हुआ करता था, which they used to buy. So when these guys came in, the first 3 big players, so to speak, Times of India and Star Plus, and the third one was India Today Group. So those guys were a little bit ke we want to reinvent and we want to give a 24-hour radio station. So काफी सारे वो जो छोटे-छोटे होते हैं ना schools, they open up. अच्छा. So आपने सुना होगा back in India एक होता है कि 24 घंटे में अंग्रेजी सीखें. हाँ. वो एक दिन 24 दिन के लिए आपको जाना पड़ता है, 1 घंटा 24 दिन के लिए, बट वो 24 घंटे ही होता है. कुछ वैसा ही हुआ था. मेरे को बोला 2 हफ्ते में आपको रेडियो जॉकी बनाएंगे. अच्छा. हाँ. So मैं बोला कि I was working in Calcutta with my dad and my family. तो
मेरे पास टाइम होता था शाम को, शादी वादी हुई नहीं थी, वेलापंती कर रहे हैं, ठीक है ये अच्छी चीज़ दिख रही है। एंड अभी अभी वो वीजेज वाला पूरा का पूरा MTV चैनल भी सारा, दैट वाज द क्रेज। तो हम लोगों ने बोला कि हम भी एकदम हीरो बनेगा, हम भी लाल जूते पहनेगा, हम भी एकदम फंकी वाला हेयर कट करे आएगा ये वो। तो हम गए, हमने 14 दिन किया कुछ 5-6 हज़ार उस टाइम पे उसको फीस थी। और वो ख़त्म करके उस बंदे ने आई थिंक लास्ट के 1 या 2 दिन वो नहीं आया, वो भाग गया। अच्छा, बंदा ही भाग गया। बंदा ही भाग गया, लेकिन उसने हमको एक पूरी लिस्ट दे दी कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दीज आर योर इनरोड्स ऑफ द स्टेशन, कहाँ पे स्टेशन का एड्रेस है, कौन जो बंदा है, हु इज़ द कंसर्न पर्सन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसकी सारी की सारी पूरी उसकी एक लिस्ट थी जो उसने हमको दे दी। उसके बाद में वो उसका कोई अता पता नहीं कि कहाँ हुआ क्या हुआ, वो गया। सिर्फ मेरा हुआ जो मैं रेडियो में घुसा, बाकी मेरे साथ में जितने थे 15-20 लोग, कोई फैशन डिजाइनर है कोई कहीं और निकल पड़ी है, कोई किसी की शादी हुई है, किसी के अभी 4 बच्चे हैं। सो एवरीबडी इज डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम रेडियो। आई वाज द ओनली, आई वुड से द लकी वन who got into this field and who is still there in the field. So that is how I started. But having said that, coming to your question, is there a blueprint for a good radio jockey? One of my CEOs back in the day in India, he said a very beautiful thing, a jock is not somebody jo you make. He's somebody who is or she is already from within. You just hone that skill. अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और आप बात करना शुरू कर देते हैं, and you have people around you, 10 people around you, and you can make a conversation, and it is an engaging conversation, you are a jock. Right. That is the basic thing that you need. It's the voice clarity, the diction, the pronunciation, जो आपको चाहिए आगे पीछे उसके, all of those are secondary. पहले तो आप बात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 10 लोगों के सामने आप अपने आप को, कैन यू होल्ड योर थिंग और नॉट? Perfect. Yeah. That's the basic. किसी भी पार्टी के अंदर अगर आप जाओ, 1 या 2 लोग होंगे who will be making sure that everybody is having fun. Sure. They That can make it. extrovert-ish type nature. I know what you mean. Either you have it or you don't have it. वो वैसा होता Yeah, है. exactly. But obviously you can work towards it. You definitely can work. मतलब काम करके you can reach to having that skill. It's a skill. At the end of It's the a day, skill and it can be honed. It's not कि अगर आपके पास में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. But it's के if it's there तो automatically it's just easier. And there's no hard and fast के ऐसा ही होता है. But if you can hold your thought and if you can hold a conversation for about 5 minutes, 10 minutes, hi hello से ज़्यादा और बिचिंग से ज्यादा अगर आप बिचिंग कर सकते हो तो आप टीवी पे जा सकते हो. एकता कपूर इज देयर फॉर यू, देन यू हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज. He said it. I did it. We all love it though. But I'd be down. No, I'm messing around. no. But yeah, These are questions that one would want to know. You know, कि क्या होता है? Does voice modulation and all of that are they very specific कि ये थोड़ा एक होना चाहिए? यार वो it takes you from being a good jock to a great jock. I would say that. Okay. Another thing which I learned later on in life when I started, and this was one of those things जो वही 14 दिन वाले बंदे ने मेरे को बताई थी. The first day जब हम लोग गए, so we were about 20 odd students. तो उसने सबको 5 की टीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया. So we were 4 teams and हर टीम को he gave a comic book. वो पतली वाली आती है जैसे. हाँ. Long time back, Tinkle and Archie's and वो सब. I know. Yeah, I'm there. I know. Exactly. वो रेलवे स्टेशन से उठा के नहीं, the same one. So 5 उसके पास में थी, एक उसने अपने पास में रखी, and the rest, the 4 comics, he gave it to के this is for your team. I give you 10 minutes, and this is an exercise. Every person will be a character. Yeah. You all go through your story. It's a 2 page की story है. Just go through it and then just come on and just, I'm not going to say anything, just do whatever you have to do. And it's the first day. So what he does is कि अच्छा ठीक है 10 मिनट के बाद में टाइमर अप हुआ, एक एक करके लोग आए, and everybody is a novice, right? किसी को मालूम नहीं है कि क्या करना है, किस हिसाब से करना है.
कोई कॉलेज से अभी निकला है, कोई कॉलेज में अभी पढ़ रहा है, कोई अभी जस्ट ही इज जस्ट इन फॉर 3-4 हफ्ते के लिए मेरे पास में टाइम है, ऑल दैट स्टफ. सो every team is in a different wavelength. कोई एकदम very straight lines बोल रहे हैं, nobody is enacting. एक टीम आई जो एकदम ही excited all over the place, and एक टीम आई which were like they were a little embarrassed कि भैया पता नहीं हमको कैसा होगा, क्या होगा, and all of those things. Then एक टीम आई which was कि यार I really don't know what to do about this and we have no clue. So उन्होंने perform ही नहीं किया. हाँ, अच्छा, okay, nervous. Okay. So you have every kind of character, right? Yeah. So the exercise was that who will you listen to on a radio station अगर तुम्हारी वाली teams are on air and you are the listener. Somebody is there. So जो टीम जिसने परफॉर्म नहीं किया उसका तो हुआ ही नहीं कुछ भी. जो embarrassed थी, would you listen to the guys who are embarrassed, who you actually can understand that these guys are embarrassed and ये खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे, तो फिर would you listen? हाँ. The ones which are एकदम straight, very monotonous tone, एकदम सीधा आए, हाँ जी क्या हाल है, ये वो करके, you know the character. तो आप उसको भी नहीं सुनोगे. Who will you listen to the most? The ones which are having fun Yeah. as a character. That's what radio is. Right. At the end of the day, it's storytelling, right? Yeah. कुछ भी आप बोल रहे हो रेडियो के ऊपर, it's all storytelling. तेरे को मालूम है क्या, यहाँ पे आते हुए मैं ये एग्जिट मिस कर गया and I had to go all the way पूरा का पूरा वो फाकी यूनिवर्सिटी होके and then I had to come back. तेरे साथ में भी हुआ है. Yeah. It's something which connects. This is storytelling. This is how we're connecting. But I could have just यार वो प्रॉब्लम हो गया, उधर से निकल गया, मैं उधर आ गया, ये वो. That's the difference. Yeah, I got it. Nah. So it is something that makes you from a great to from a good to a great jock is how you perform on radio. How, not even saying how good the story is. The story सबकी would be more or less the same. कोई ज़्यादा तड़का डालेगा, कोई ज़्यादा कम मसाले डालेगा, कोई ज़्यादा उसको भूनेगा, something or the other will happen. But at the end of the day, it's more about के how you perform and how excited are you to tell the story. Dude, पता है क्या हुआ, ऐसे हुआ. Dude, तेरे को मालूम है क्या, ऐसे हुआ. मैं कल शाम को जब तूने मेरे को मैसेज किया था, I was like यार मैं 6:30 बजे तक अब पहुंचूंगा, मैं 5 बजे अपना एकदम रेडी होके बैठा हूँ, अब मैं 1.5 घंटा क्या करूँ, मेरे पास में टाइम नहीं है. तो मैं बोला मैं बीवी को लेके अभी मैं जाता हूँ शॉपिंग करने, लेकिन साला 1.5 घंटा अगर मैंने उसके साथ में शॉपिंग करी, मेरी वाट लग जाएगी. Good, very good. I got it. Yeah. It's all about storytelling and how well you put it across. And the more fun you have, the other person is also going to have. That's where did I answer your question? Yeah. Of course. So of course. that's the difference. अब दूसरी चीज जो इसके अंदर, अब I'm gonna harass you a bit on this, right? Please do. So मेरे बच्चे हैं. I don't get harassed इतनी आराम से. equipment जो होता है, हाँ. is it very complicated or is it similar to I do not know, like is it similar to a DJ equipment, or what is the equipment and how do you, like what goes in behind The console you're talking about? the whole console? Easy. Sorry. Okay. So the console is, it looks like an aeroplane. Yeah. It's one of the easiest things to work on. आपको सिर्फ अगर एक चीज मालूम है कि ये आपका माइक का स्विच है और ये वाला फेडर आपने ऊपर करना है बात करने के लिए, बात आपकी खत्म हो गई, ये वाला फेडर आपने नीचे करना है. और दूसरी चीज एक बटन होता है वहां पे टू प्रेस, बिकॉज ऑफ विच द सॉन्ग स्टार्ट्स टू प्ले. Okay. Two things you need to know, basics for you to become a good jock. That's it. वो दिखाते हैं वैसे है कि हाँ. इतना ज्यादा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. हाँ, वो कॉम्प्लिकेट करने के लिए चीजें बहुत सारी है. Then you build on it. Then you have hotkeys. Then you have other stuff. Then you have कि मेरे को यहाँ से निकालना है, मेरे को ये गाना बीच में प्ले करना है, मेरे को ये कॉलर के साथ साथ मेरे को साउंड इफेक्ट्स डालने हैं, दुशासन क्या कर रहे हो, प्ले डूब रहा है. All of those things happen. Those are all you build on it, right? But the basics are just switching on the mic, talking how you want to talk, enjoying what you want to talk, and making the other person just, if not laugh, let them have fun. I always say, you can't be funny in every
time you talk, but you can be fun. That's more important. Yeah. So if you're having fun, the listener will have fun. Simple as that. It's not rocket science. Radio is the easiest medium. सच्ची बोलूं, कोई लाइट का झंझट नहीं होता, कोई कैमरा का झंझट नहीं होता, कोई ये नहीं होता कि मेरा ये वाला साइड इज माय प्रोफाइल एंड दिस वाला साइड इज, कुछ नहीं है. यू आर सिटिंग इन अ रूम जहाँ पे कोई नहीं है. Nobody is there to judge you. And if so a very am I talking too much? No, please. That's what we feel. Sorry. 1 साल हो गया है जब मैं रेडियो पे नहीं गया हूँ. भरा पड़ा हूँ मैं इस टाइम पे. But another one of my CEOs who was there in my second company, he had told me once that you never talk to 1.5 million people. You always talk to one person. In radio, किसी भी आप जॉक को पूछोगे, किसी भी आप प्रेजेंटर को पूछोगे कि आप when you talk, how many people do you talk to? 50% of them will say that I talk to a listenership, हमारी ये है, वो है, 1.5 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, whatever it is. But who do they actually talk to is just one person. So one of the best things that he told me was, and this guy was with Radio Midday. Achha. Back in Bombay, which was with BBC के साथ में, they had come out with a radio show, a radio station. And so training के time पे, he used to tell us कि your best friend, get a photograph उसकी, keep it in front of you, talk to him when you are recording. The way you tell, जो आप बात कर रहे हो, जैसे आप उसके साथ में बात करते हो, वैसे ना आप अपनी मदर के साथ में बात करते हो, ना अपने फादर के साथ में, ना अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स के साथ में, ना कजन्स के साथ में. That is a very different tone. बिना गाली के, if you can express the same emotions, if you look at that photograph and talk, like for me, it's 2 of my best friends are Gagan and Montu. Right? So, उन लोग के साथ में, so I used to put Mondo का photo in front of me, and I used to say कि तेरे को पता है क्या ऐसा हुआ, ये हुआ, and then अमिताभ बच्चन की ये पिक्चर के अंदर में he was wearing these boots, and वो वाले जूते मैंने देखे ही नहीं थे पहले. But if I say this to my mom, आपको मालूम है ऐसा हुआ था, ये हुआ था, the tonality completely changes. So, put that बंदा या बंदी का photograph in front of you, enact, say, talk to that photograph. And वो वाले emotions is what we need on air. So this was like a practice for us. Training ground के अंदर, before we had launched our second station, this is what we were training on for the, I think about week or 10 days. Every single day, every single link. Yeah. And that made a huge difference. It is, now that you put it that way. This is brilliant for one to at least, get in line with, okay, ये करना है. So that's a beautiful way of going about it. Yeah, wonderful. Yeah. Very, very good. Yes. I mean, कच्चे नहीं हैं हम. पर ऐसा कभी हुआ है कि गाली, you're also from Delhi यार, कभी हुआ है ऐसा कि आते because it's a मौशी. yeah. हाँ, बहुत दफा हुआ है ना, बहुत दफा हुआ है. But there is something called a dump switch on radio. तो 8 सेकेंड का डिले होता है. यहाँ पे नहीं हुआ है for the thing, but दिल्ली के अंदर I remember एक बारी हुआ था. But nothing great, nothing that much, but वो साला कुत्ता टाइप्स वो वाला निकला था. ये कैसी गाली है यार. Sorry यार, but I'm sorry. ये थोड़ी नहीं गाली. Disappointed. I know. एक एसी ऑन कर दे, मेरा ना कर दे. सॉरी ब्रदर, ये बीच में मैं ऐसे करता रहता हूँ. सॉरी, बट ये भी आएगा तो ये कोई गाल नहीं यार. How's your Punjabi? Decent. Yeah? Decent. Okay. जाने भी तो यार वैसे पूरी देखी है. I mean, I'm sure you would. देखी है ना? Amazing movie यार. One of my most favorite movies. Because I know that in there, that's there, that bit is there. So yeah. It's amazing. I really like it यार. Especially Om Puri उधर उधर amazing यार. Phenomenal actor he was. So there was interesting. You've seen जाने भी तो यारो? Yeah. I see. तो मैं जब Friday after 9 or 10 p.m. if you know what I mean,
तो वो लास्ट के 15 मिनट है ना जो महाभारत वाला, महाभारत वाला सीन. I to promote that like anything. Yeah, मैं तो अपने रील्स में भी डालता रहता हूँ कई दफा. So yeah. It's crazy, dude. And it came out way back in what? I think 70s, 80s के अंदर कुछ आई थी. Yeah. It was made at a shoestring budget. I don't think so. किसी के भी पास में पैसे भी थे अपने कपड़े और कॉस्ट्यूम वगैरह के लिए, सबने अपने अपने कपड़े पहने थे. And the other day I saw one of the reels के ऊपर कि they had actually, this girl was talking about जाने भी तो यारों as a movie के how it is a cult today, लेकिन उस टाइम पे it bombed, which happens with every cult movie जितनी भी हैं. And उसके अंदर they are talking about कि कैसे the government is corrupt and the system is corrupt and क्या क्या हो रहा है, वो ब्रिज गिर जाता है, those people are dying and then but फिर भी यहाँ पे हम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, उनको किसी और जगह पे ले जाएंगे, we'll show कुछ some other story ताकि this bridge वाली story gets all उनके दिमाग से निकल जाए and all of those things. Yeah. And cut to what is happening in India today. You know? So, and this girl is actually talking about that. And I was thinking कि जाने भी तो यारो is actually जैसे हम लोग आजकल बोलते नहीं कि The Simpsons predicted this. Yes. My God, yes. कि ऐसा होगा, वो डोनाल्ड ट्रम्प नीचे आएगा एस्केलेटर से, ऐसा होगा, इलोन मस्क ऐसा करेगा. जाने भी तो यारो was our Simpsons, right? It predicted all of these things back in the day. 100% यार. No, ये सही, मतलब वैसे अगर सोचोगे तो हाँ ठीक बात है यार. बड़ा It's amazing. And Kundan Shah was just brilliant at his work. And वो last में फिर भी Nasiruddin Shah and the other guy, वो बेचारे फिर भी they are वो जेल के अंदर जा रहे हैं and they're still singing the song हम होंगे कामयाब. Yes. What a movie, yeah. What a movie. Brilliant. But that cast also, budget होगा नहीं होगा, those 5 individuals in that film, they are not, you cannot call them actors anymore, you cannot even call them legends. These are gentlemen who are like they are the next, like इनकी तो मूर्ति लगा के if one wants to act, these are 5 people you take lessons on them, just watch them. Oh yes. Nasiruddin Shah, Om Puri, Satish Kaushik as well. Yeah. And Pankaj Kapoor. Yeah. Oh my God. Like इनको तो And somewhere down the line Om Puri, sorry, Om Puri. Forget Om Puri. So these 5, just इनको तो आप पढ़ लो पूरा, you know. Fantastic. It's fantastic the way it is. Then you also have that Vidhu Vinod Chopra is one of the guys in Mahabharat wale scene ke andar. Then you have not a lot of coming up. Sir, ऐसे करते हैं. Sir, ये करते हैं. It's like Draupadi. Oh yeah, I'll see that movie again today. Just come back to me. It's fantastic. It's fantastic. It's just fantastic. Okay, one more thing, radio related. So don't beat me up. Bol, no problems. This is life. गाने और ये सब, when how does it work? So जैसे अब now suppose if we hear you for about 3-4 hours in the morning. हाँ जी. ठीक है, 3-4 घंटे हम सेट को सुन रहे हैं. आफ्टर दैट डन यार घर जाओ आराम करो, क्या होता है, I wish. कैसा होता है? बिकॉज आई एम श्योर आपको अगले दिन के लिए you have to prepare, so it's not like it is pretty much, it's a more chilled out thing. It's not कि आपको वहाँ पे बैठ के ही prepare करना है. Like if the basics are done, you can leave. It's not कि आपको 8 घंटा पूरा बिताना है. You have to be in and out, आपको करना है. Because with digital now, there are 10 other things which are happening, right? The jogs are shooting video out, get dressed, कोई फोटो शूट हो रहा है, कोई वीडियो किसी का वॉक थ्रू है, कोई वॉक थ्रू करके आ रहा है, कोई अपना रील्स, बिकॉज वी हैव टू डू इट फॉर द स्टेशन, वी हैव टू डू, कोई अगर जैसे आमिर खान का बर्थडे है तो हम लोग उसके ऊपर में कुछ बना रहे हैं, या देयर इज होली का समथिंग इज कमिंग अप. सो समथिंग और द अदर विल कीप हैपनिंग. प्रेप अगर उस टाइम पे नहीं हो रहा है तो like if it's the morning show, you do it after the show. If not after the show, then you do it later in the day. By evening आपको पता चल जाता है कि कौन सी वाली the news is going to be the big one for tomorrow. Unless there's a breaking news somewhere, which is highly unlikely every single day. तो आपको नॉर्मली 5-6 बजे तक पता चल जाएगा कि ये वाली न्यूज़ जो है ये बड़ी वाली होने वाली है, इसके ऊपर में आगे कल बात कर सकते हैं.
एंड देन द टीम डिस्कसेस इट, प्रोड्यूसर्स होते हैं, बैक एंड में मैं होता हूँ, द जॉक्स आर देयर, सो वी ऑल आर डिस्कसिंग कि इसके अंदर हम लोग बाइट्स ले सकते हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, दीज आर दी वो टॉपिक पपी जिसको बोलते हैं. हाँ समझ गया. सो दिस कुड बी वन ऑफ द टॉपिक पपीज जिसके अंदर 10 अलग अलग पर्सपेक्टिव अपने को मिल सकते हैं. समझ गया. ओके. तो वो होता है. ओके. So it's not a 9 to 5 or it's not an 8-hour shift that is there, but अगर काम हो गया है तो फिर हाँ मतलब मतलब ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली वाले हैं तो बैठ ही जाएंगे, अब वहाँ पे ये हमारा हो गया. अब नोएडा भी हमारा है, अब एनसीआर भी हमारा है, हम तो यहाँ से निकलेंगे ही नहीं. अगला हार जाएगा क्या मैं बताऊँ क्या हो गया भाई. So it's not like that. समझ गया. एक अच्छा another thing brother, तो जब गाने आप लोग बजाते हो, like how do you, is there a, like suppose say Honey Singh this new song has come out, right? So do you prepare well in advance कि ये वाला बजाना ही बजाना है, और what you how does it work? So there is a certain person in every team who is the music manager. Okay. The music manager का sole purpose is to make sure कि जब भी म्यूजिक आप सुने, it has to be the best music for a listener. म्यूजिक सब लोग के पास में अवेलेबल है, राइट? राइट फ्रॉम वी हैव हमारे जो कंपटीशन के अंदर बॉलीवुड रेडियो स्टेशंस के अंदर वी हैव 6 स्टेशंस आउट हियर इन द मार्केट टुडे. Correct. सब लोग के पास में एक्सेसिबिलिटी है कि सब लोग सब गाने बजा सकते हैं. कौन सा वाला उस टाइम पे इज द की, कौन सा वाला किस टाइम पे इज व्हाट सेपरेट्स यू फ्रॉम द अदर लॉट. फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं सुबह 6 बजे, अगर आपका फॉर्मेट रेडियो नहीं है, जैसे कि मेरे को अगर सिर्फ हाई एनर्जी म्यूजिक ही नहीं चलाना है, मेरे को डांस म्यूजिक ही चलाना है, चाहे वट एवर टाइम ऑफ द डे इट इज, तो 6 बजे 5 बजे इन द मॉर्निंग या 12 बजे एट नाइट, डज नॉट रियली मैटर, मेरे को सिर्फ क्लब म्यूजिक ही चलाना है. देर आर स्टेशंस लाइक दैट, देर आर एन नंबर ऑफ स्टेशंस जो जिनका फॉर्मेट ही वो है. Okay. कि आप कभी भी ट्यून इन करो, अगर आपको क्लब हिट्स चाहिए, वो वाला आपको मालूम है कि वही वाला स्टेशन है. नॉर्मल सिनेरियो के अंदर अगर आप सुबह 6 बजे निकल रहे हो घर से एंड यू आर गेटिंग अप एट लेट्स से 5 o'clock, you don't want to listen to 120 BPM, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. ठीक बात. Right? So you're basically easing yourself in. It's the same way the music will also need to be that way. You will soothe the music in. You will make sure कि जितने भी गाने हैं they are on that level which can't be a झूम बराबर झूम, but they can be a बोलना हल्के हल्के. But अगर किसी का नया गाना है तो do you get asked to We push do. it more, or is it the RJ's call? It's never the RJ's call. अच्छा. It's never the RJ's call because the music manager, it's the music manager का call कि ये वाला गाना मैं चलाऊंगा, मेरे को कहाँ पे चलाना है. अच्छा. हनी सिंह की बात करते हैं, जो नया वाला जो गाना है, Example के हिसाब से जो नया वाला गाना है, I would want to play it when there is an appetite from the people who are tuned in. Yeah. I cannot be playing it at 5 o'clock because it's a very hard thumping song. Yeah. I will either play it जब मेरे को मालूम है कि they are already in the car, sitting in the car, going to their workplace, और वहाँ पे जाने से पहले they need to get themselves energized. तो मैं तब बजाऊंगा, या फिर वो लोग शाम को वापस आ रहे हैं तब मैं बजाऊंगा, क्योंकि मेरे को आई नीड टू मेक श्योर कि दे आर हैविंग फन इन द कार और इन द आफ्टरनून फॉर दैट मैटर, बट नॉट इन द अर्ली आवर्स ऑफ द लेट नाइट्स. अच्छा. क्योंकि यू आर ऑलरेडी दैट साइकिल इज सच बॉडी क्लॉक, राइट? Yeah. I got you. सिंपल एज दैट. तो उस हिसाब से इफ हनी सिंह केम आउट विद अ सॉन्ग व्हिच वाज अ मेलो सॉन्ग, देन यू प्ले इट अराउंड इन दैट वे. Okay. I got you. So according to जो गाना आ रहा है, whether it's a new song or an old song, म्यूजिक मैनेजर का फाइनल कॉल होता है कि मेरे को ये कहाँ पे प्ले करना है. एंड दैट इज व्हाट सेपरेट्स स्टेशंस, कि कौन सा स्टेशन किस हिसाब से. बट आप लोग को आती है ऐसी पुल आती है कि यार ये हमारा नया गाना आ रहा है, आप लोग थोड़ा डेफिनेटली So आती you है. guys pay for it? How does you have ऐसे free to use है? It is free to use अच्छा. because the companies themselves send it. So a lot of the times the companies will send के दिलजीत का हमारे पास में ये नया टेंशन आया है, वो कल चला दो. करण औजला का टेल मी आया है, वो चला दो. Okay. We want to see the reaction and please tell us. And then they ask कि आपने कितनी बारी चलाया, कैसा रहा. They ask for responses as well, which is a good thing.
you know, they also need to understand कि कौन सा वाला गाना चल रहा है, कौन सा वाला नहीं चल रहा है. Now, for the longest time, after his shows, Diljit did not have an album for about 2 महीने तक. Quite नहीं ज़्यादा था यार, I think. हाँ, so the first one which came out was I think Tension या कुछ आया था उसका. So उस टाइम पे the art जो managers थे उसके, जो म्यूजिक लेबल था, उन्होंने पूरा का पूरा एल्बम भेज दिया था, बट दे मेक श्योर कि आप ये वाला गाना पहले चलाओ. अच्छा. This is what is breaking. Okay. And as and when we break more songs, we'll tell you, and accordingly then you can break modern. That's the way it fine, goes. So yeah. It's very easy. I thought maybe RJ's, you know. So if one, like अब जैसे like how we were discussing before, कि content needs a push from UAE. Yes. It definitely does. Oh yes. अब now independent artist अगर कोई होता है, हाँ. तो जैसे if you're, because it's about giving a platform to the people here also, Absolutely. right? तो how does an independent artist, like, would you be able to push them as well? Absolutely. Always looking for independent artists, always looking for new artists, always looking for people to come on board, even if they are not from the industry, but they have a passion for singing, for performing. Always up for it. I remember back in the day, we used to have City 1016 Unplugged. Okay. It was basically a platform Yes. for singers, percussionists, performers, artists, anything to do with music. And these guys, matlab, unka, the visa used to say it sales. Yeah. And they were working with banks. They were working with insurance companies. They were working with IT companies. Some of them had very senior positions. Yeah. But they loved music. Right. They've written songs. They've got it produced as well. And होता है ना कि मतलब I want to do it, and they were brilliant at it. So we gave them a platform. I think weekly होता था वो back in the day when Tia and Rohit used to do the show. Then Mariam and Lokesh took over, and then they also continued for a little bit of time. So उस time पे whosoever these guys were, जिस भी concert के साथ में we were associated with, we made sure that these were the opening acts. Oh wow. Okay. For an Atif Aslam concert, for an I think we did it for Arijit long time back. When he wasn't that big. Yeah, of course. I think Hard Rock में किया था आप लोगों ने वो. Yes. That was there. फरहान अख्तर के साथ में हम लोगों ने किया था एक, and उससे पहले we had one. Yeah. So you're open to that, because Absolutely, yaar. like I said, with everything that we do here, it's about giving that, creating talent from here. Absolutely. And so our resident DJ Buddha. Now, he has something called the same thing. Okay, if you have a song, if you are a singer, if you have already a song, he gets it produced, he makes the video, he puts it out, he plays it on City, and we make sure that we promote it as well. We get the artists as well. So there is a full ecosystem. If you can, city1016.ae, sorry, shameless plug, but Good one, but necessary one. I'm definitely a necessary one. Are you guys the only ones who are doing this? I am not sure, but we definitely were the first one, is what I can say. So yeah, kudos to that. Dubai, Yes. the place that I call home, you call home. Oh, and yeah. Other people. Love it. Now you've also हो गए आप लोग भी कितने 15 साल. 15. 2010 I came. 15 साल हो गए. So I grew up here. So Oh, lovely. and it's like I said, but 15 years ago, 2 साल is your stamp, and then after that it's हाँ, सब आते हैं ये सोचते हुए कि हम 2 साल में पैसा कमाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे. yeah. It's fine. What is it to you? It is home. Just pure, simply home, away from home. Excuse me. No worries. So, my kids are born here. Both of them. And Boys, girls. both boys. Oh, lovely. Same here. Oh, really? Oh, fantastic. So, yeah. So, the thing is that Dubai is a better version of India, you know, and it's closer to home. You can do everything, and if the need be, I can go back to India and come back within the weekend. मतलब फ्राइडे नाइट की मैं फ्लाइट ले सकता हूँ, जाके मॉम को, सिस्टर्स को मिलके आई कैन बी बैक ऑन संडे या मंडे तक. एंड मेरे को उसके अंदर कुछ ऐसा भी नहीं है कि आई हैव टू प्लान आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सिमिलरली फॉर देम. एंड द वन थिंग आई रियली लव अबाउट दिस प्लेस इज द सेफ्टी, dude.
that's like hands down कुछ भी और जो भी और कुछ है सो है. The safety is one of the most prime things जिसकी वजह से I don't see myself जब तक वो लोग डंडे मार के लाते मार के नहीं बाहर भेजेंगे मैं नहीं जाने वाला, मैं चिपक जाऊंगा. I'm like that glue, ऐसे करके भी उठाओगे. Yeah, but brother, I don't know how to thank you enough. A lot of people would have those questions, so that's why I wanted to ask you a bit about radio as well. And you are, in all the sense, true words, or the OG of the game. अरे OG मतलब मैं फिर से नहीं बोल रहा, but मतलब मेरा मतलब ये है कि you are good, very, very, very good at this line. thank you so much. In this line, so God bless. Thank you so much. Continuing, and thank you for making time for Time Out. It was lovely and to sit here and speak with you. My pleasure. Thank you so much. And like Mokshat was messaging me in पहले कि ये टाइम पे आना है, ये करना है, वो करना है. And I was asking him कि भाई करना क्या है, बात क्या होगी, वो सब. Thank you for making me comfortable. Really appreciate it and really had a lot of fun. So Yeah. appreciate it.